folding की वजह से it has the elastic एक चाहिए उस टाइम से elastic capability. So let's imagine this to be the sinus, and here this thing is the Schneiderian membrane. So what we do is that our purpose is coming from, this is of course the alveolar aspect. Thank you very much. And the whole purpose is that we actually lift this up like a tent, considering कि यहाँ पे नीचे implant आ रहा है, and pack the bone inside so that we get enough height of the bone to place an implant. Now, sometimes this happens in one go. Sometimes it happens in 2 stages. Sometimes even in 3 stages. So we'll talk about what the variabilities are in this regard. Yeah, we will make you go through these exercises, and it will make things easy for you to understand how it is. Just circulate it around. See कि यहाँ से this is actually the maxillary antrum. Now, the Schneiderian membrane has 3 distinctive layers within itself, which is just about less than 0.8 millimeters in thickness. That means 8 millimeter की thickness होती in its cross section. It has fewer blood vessels as compared to the periosteum जो कि कल डॉक्टर कोरम आपसे बात कर रहे थे, and henceforth it appears to be a more yellowish or a paler color, and sometimes even when we do an open sinus lift, it actually appears to be slightly blue in color. We'll talk about that, how and why that is so. The periosteal portion has elastic fibers. Now, this elastic fibers gives us the ability for it to be flexible, to be raised, to be separated from the bone, and of course, to expand. It's 11 o'clock. Now, a little quick talk about what happens within the sinus and where they are connected. The interior wall has the infraorbital nerve and the blood vessels. Now, if we have increase in pressure over the infraorbital foramen, this can indicate, कई दफ़ा आपको साइनसिस के ऊपर जब पेशेंट्स आते हैं ना साइनसाइटिस, तो वो आपको इंफ्राऑर्बिटल एरिया में कहते हैं सर यहाँ पे मुझे ज़रा प्रेशर फील होता है. They will indicate somewhere just not below the sinuses but just under the orbital socket. यहाँ पे वो कहेंगे कि प्रेशर पड़ता है. So usually that is a presented clinical sign and a symptom. The superior wall is very thin. Now if we imagine the sinuses, तो इसकी upper superior wall जो है, it makes the base of the orbital socket. Are we clear? सर फिर से बताइए. मैं भी आपको. So if we see here, the superior portion of it, the sinus, which is the uppermost portion, is the floor of the orbital socket. Which is the interior wall? This, This is the interior wall. yes. That's the inferior aspect of. Understand, this is a 3-dimensional object, and this is going backwards towards the zygomatic process. And the apex is towards the zygomatic process, no? Yes, here. सर पेशेंट अमूमन बोलता है आगे कि मुझे यहाँ पे जो आपने बताया जैसे दर्द हो रहा है, तो वो आपको इस एरिया में बताएगा. वो यही बोलते हैं कि जैसे वो एक केनाइन, एक पेशेंट का मेरे पास आया, उसका वो केनाइन जो है वो केरियस था काफ़ी, तो उसका मैंने RCT का बताया, तो वो बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे दर्द होता है. That's a slightly different thing.
Okay. Canine space infection? Yeah. Yes. Canine areas are very important in regards to ये endodontist आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि many times infections of the canine end up causing cellulitis, and they can actually travel in this path interior all the way up into the brain actually. So we never want to actually manipulate or do anything to the superior wall, because eye और orbital socket है और उसको हमने manipulate किया, interfere नहीं करना in any way whatsoever. The posterior wall separates the antrum from the infratemporal fossa. That's too far back. हमारे बहुत ज़्यादा उसकी relevance नहीं है. Containing vital structures including the maxillary artery. Medial wall separates it from the nasal fossa, and the lateral wall. Now this lateral wall जिसकी हम बात करें, this is what we see on the outside of the zygomatic and the cheek side. पीछे ही आओ तो बेहतर है. Now, what essentially is a sinus lift procedure? It is basically a surgical procedure that allows us to augment bone in the maxilla, of course, which increases the likelihood of successful placement of dental implants. Now, ज़्यादातर जो studies हैं ना, जो दुनिया में available हैं, वो हैं failed या failing implants की. क्यों? तो मैंने एक साइनस लिफ्ट किया, इम्प्लांट्स मैंने लगा दिए, प्राइमरी स्टेबल था, ऊपर ग्राफ्ट शाफ्ट कुछ बना, कुछ लगा, और अब इस चीज को स्टडी करने के लिए क्या मैं पेशेंट का इम्प्लांट ज़ाया करूँगा? क्या पेशेंट को एक सर्जिकल प्रोसीजर में डाल के उसका साइनस खोल के उसकी मैं क्रॉस सेक्शनल स्लाइड्स बनाऊँगा? नहीं, हमें सिर्फ नजर आ रहा है एक्सरे से कि वहाँ कोई बोन लाइक मटेरियल है. हाँ, किसी पेशेंट ने जिसने सर्जरी करवाई हो, साइनस में करवाए हो, उसकी डेथ हो जाए, वो वॉलंटियर करे टू हैव हिज ओन सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड एंड ऑटोप्सी में के लिए आप उसको रिसर्च कर लें, तो दोज नंबर ऑफ पेशेंट्स आर एक्चुअली क्वाइट फ्यू. So ज़्यादातर स्टडी जो हैं, they are more available on the failed implants or why and what kind of an infection is happening when implants fail, whether it's in the sinus or elsewhere in the body as well. So bone from another part of the body. Now this is where we early started. We used to do autogenous bone grafts, which means कि हम या चेन से या रैमस एरिया से या इलियक क्रेस्ट से भी, और ये एक जनरल एनेस्थीसिया का प्रोटोकॉल था और ओरल सर्जन्स थे जो कि जाके इस किस्म के काम करते थे. Now what's the problem with autogenous grafts? They act as a catalyst, na? Like they, within few days or weeks they go, like their activity goes down. So the biggest problem with autogenous graft is resorption. So we have a large and a huge amount of resorption with autogenous grafts. So number one. Number two, there is a morbidity on another site. Let's say कि अगर आपने ये क्रेस्ट से फोन लेनी है या चिन से भी लेनी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक केस किया था, दो केस किए थे, और एक की उस बंदी की ज़िंदगी मिजरेबल थी फॉर एटलीस्ट 3 weeks, जब तक ये सारा कुछ हील नहीं हुआ था. आपका मेंटालिस मसल की अटैचमेंट यहाँ पे है कि आप रेस करते हैं चिन से ग्राफ्ट लेने के लिए, वो पेशेंट जब बाहर स्माइल करते हैं, वो जगह स्टिच खुल जाती हैं, सॉफ्ट टिश्यू बहुत डेलिकेट होता है, वहाँ पे थिन टिश्यू होता है जो आपका पेरियोस्टल जिंजिवल टिश्यू है, और कॉन्स्टेंटली इट इज़ अ पेनफुल थिंग. नंबर वन. नंबर टू, chin grafts or mandibular grafts and ramus grafts,
कल डॉक्टर खुरमा से क्या बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा वायबल प्लेटलेट सेल्स कहाँ से आएंगे? Narrow spaces में से, narrow में से. So compared to the maxilla or the mandible, कौन सी ज़्यादा cortical bone होती है? Mandible. So taking a graft from the chin or the ramus, posterior ramus में, it is thick cortical bone with very little marrow or cancellous thing. So it does not have a rich blood supply or a porosity to actually act as a very conducive bone graft. So these were the issues that we used to face with these kind of things. But हमने किए हुए ज़रूर हैं. In the 90s we did do one case where iliac crest और बाकी हमने उनके chin से या ramus से लिया करते थे. अब इतना कुछ आ गया है. We have allografts. Do we know what an allograft is? Do we know what kinds of grafts? डॉक्टर ने कुछ बात की थी. Xenografts, allografts. तो क्या फ़र्क है किसमें? Allografts same species का होता है, मतलब same species का. You take the graft from another individual but of the same species. Exactly. तो वो एक कोई गोरी टीम जो है उसने अपने आप को डेडिकेट कर दिया होगा तो उसने फिर उनकी बोन लेके बोन बैंक्स होते हैं, they process them, उनका वो प्रोटीन डीप्रोटीनेट करते हैं, उनके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स निकाल देते हैं so that they don't react. And that is what is available to us today. Then we have xenografts. Xenografts came. Other species. The graft that we take from the other species. So usually from animal or bovine or porcine sources. सबसे ज़्यादा compatible xenograft is actually porcine. जितना सुअर का bone, components, skin, आपके cosmetics चीज़ों में use होते हैं ना, there are at least 2,000 products that actually use porcine origin की चीज़ें. तो सबसे ज़्यादा compatible इंसान जो है ना, अल्लाह माफ़ करेगा, I'm sorry to say, वो सुअर के साथ ही है. But हमारे क्योंकि religious reasons होती हैं तो यहाँ पे porcine वो bone available नहीं होती यहाँ पे. ये मसला होता है, सबसे बोन मिलती नहीं है सभी से. तो और उसके लिए यूरोप में issues हैं towards use of allografts. So they generally have a very fond use of bios, which is a xenograft, the bovine origin के. अमेरिका में ये issues नहीं हैं, so they use a lot of allografts. तो जो studies आपको यूरोपियन साइड से मिलेंगी, वो ज़्यादा आपको मिलेंगी towards bovine and xenograft. फिर हमारे पास synthetic grafts भी होते हैं. वो क्या होते हैं? ओके, और वो क्या होती हैं? जैसे कल डॉक्टर खुरमा आपको बता रहे थे कि कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी घुसा दिया करते थे, तो वो क्या करते थे? मेरी न्यूज़ से आपको तो सॉफ्ट टिश्यू ग्रो कर जाता था उसके पास. उन्होंने ये बताया कि हार्ड टिश्यू कल हम बात डॉक्टर खुरमा आपको कर रहे थे ना, ये कह रहे थे कि a graft needs to be something that replicates the architecture and the function and form of the recipient area or site, which means कि जैसा टिश्यू है वैसे ही हमें टिश्यू चाहिए. स्केल अप करना. So generally अब हम क्या करते हैं? So we've got, let's say हम एक autogenous graft नहीं लेना चाहते क्योंकि वो resolve भी करता है and it is pretty uncomfortable to administer another surgical site plus the time involved. Plus patient आपको कहता है कि मेरी हड्डी आपने लेके मेरे में लगा दिया तो आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? So आप एक लेकिन we have to be realistic कि we have these issues as well in the sense कि आपने patient को charge भी कर रहे हैं. That is why हम उसको bone substitutes नहीं कह रहे, as Dr. was telling me. We do like to address them as grafts. So what is the general understanding? The general understanding now is that we, at least in our practice with Dr. Gaurav and myself, we're very fond of composite grafts. ये कल आपको PRP और PRF का बताया था और इसकी बहुत हाइप आई है पिछले 5-1 साल में, और जितनी तेज़ी से दूध उबला था उतनी तेज़ी से वो बैठ भी गया. So sticky bone और PRF and PRP and IPRF and APRF बहुत यूज़ हुए थे. अब उन्होंने देखा कि यार it's not a great hype. इस अब तक के लोगों ने बालों में वो PRPs जो है